Hello everyone, welcome to study panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Drangadra. In today's video, we shall start part 3 of chapter 5, Does It Look the Same? Dear students, if you have not watched our part 1 and part 2, you can find a link over here. By clicking on the link, you can watch the previous parts. Now, in this video, we shall learn about 1/4 turn, 1/3 and 1/6 turn in detail. Dear students, there are really many confusions about 1/3 and 1/6 turn. Please stay tuned so that you will get all your doubts clear at the end of this video. Let us see all about 1/4 turn. See students, in our previous videos also we have discussed that we have to just keep in mind a wall clock in our mind to learn all these turns. Now first of all, we have divided this clock into 4 equal parts. This is first quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. Now suppose if any object is at 12 o'clock and if it travels to 3 o'clock, that means that particular object has traveled 1/4 turn. Now one more thing here we need to remember, if you observe this very carefully, this is a right angle. दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट 90 डिग्री ट्रैवल करता है, दैट मीन्स वी कैन ईजिली से दैट ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड 1/4 टर्न. नाउ वन मोर थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड while making 1/4 turn, that suppose if an object is at 3 o'clock and if it reaches to 6 o'clock, then also we can say that that particular object has traveled 1/4 turn. यानी हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं, जो चीज़ 12 पर है और वो 3 पर आती है ट्रैवल करके, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस चीज़ ने 1/4 टर्न मोमेंट किया है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जांपल्स. नाउ 1/4 टर्न. Does the fan look same on 1/4 turn? See, this is a fan. Now we have to make it to travel these blades in a movement of 1/4 turn. Let us see. See, this is a fan. Now this is our 12 o'clock. If this blade moves to 3 o'clock, then we can say that this fan has traveled or make a movement of 1/4 turn. Let us make a movement of 1/4 turn. See, जो 12 पर था वो 12 पर, वो जो 12 पर था वो 3 पर आ गया. दैट मीन्स वी कैन ईजिली से दैट इट हैज़ ट्रैवल्ड 1/4 turn. Does it look same on 1/4 turn? Yes, it looks same on 1/4 turn because ये before 1/4 turn है, ये after 1/4 turn है. There is no difference in these two fans, so we can say that it looks same after 1/4 turn. Now one more fan with us. Here we can see the color of two blades are orange and color of other two blades are of blue. Now let us see and make a 1/4 turn of this fan. This is 1/4 turn. Here we can easily say that it was earlier here and now it is at 3 o'clock. So this fan has traveled a distance of 1/4 turn. Now does it look same after the 1/4 turn? No, it is not looking same after the 1/4 turn. We'll write no for that. Now among the following shapes, find out which ones would look the same after 1/4 turn and put a tick mark. See, here we are going to discuss many objects. Those objects which will look same on a 1/4 turn, we'll put a tick mark on it and put a cross mark on the shapes that will not look the same after half a turn, and we'll put a cross mark on the objects that will not look same. See, the emphasized word here, will not look same on a half a turn. Let us see. Now we'll make 1/4 turn of this triangle. Does it look same on 1/4 turn? No, so we'll not do anything. If it looks same, then we'll put a tick mark, otherwise we'll leave it as it is. Now let us see. We'll make a half turn of this triangle. Does it look same on a half turn? No, so we'll not do anything, because if put a cross mark on the shapes that will not look same, so we'll put a cross mark over here. इसके ऊपर हम लोग जो है क्रॉस मार्क लगा देंगे, क्योंकि ये हाफ टर्न पर सेम दिखता है.
नहीं, ये हो गया इसका हाफ टर्न. Now this is a window grill. Let us see. Does it look same on a 1/4 turn? No, it does not. So we'll put a cross mark over here. After half turn, does it look same on a half turn? Yes, it looks same on a half turn. So we'll put a tick mark for this. Now circle. This is a wheel. Wheel will always look same on half turn and 1/4 turn. Let us see. We'll put a tick mark for this because it looks same on a 1/4 turn. Now we'll make half turn of this wheel. Let us see. On a half turn also the wheel looks same. So we'll put a tick mark for this. Let us move on to the other objects. 1/4 turn. We'll make 1/4 turn of this. Does it look same on 1/4 turn? No. So we'll put a cross mark for this. Now does it look same on a half turn? No, it is not looking same on a half turn. So again we'll put a cross mark for this. Now we'll move on to this. Does it look same on 1/4 turn? Yes, it does look same on 1/4 turn. So we'll put a tick mark for this. Now does it look the same on a half turn? Yes, it looks same on a half turn. So here also we'll put a tick mark for this. Now this shape. Does it look same on 1/4 turn? No, it does not look same on 1/4 turn. So we'll put a cross mark for this. Now does it look same on a half turn? Let us see. Yes, it looks same on a half turn. Actually there is a difference in color. This is a light green and this is a mild green color, but both are green and both have the equal sense of color. So we'll put a tick mark for this because it looks same on a half turn. Now we'll make 1/4 turn of this. Yes, it looks same on 1/4 turn. So we'll put a tick mark for this. Does it look same on a half turn? Yes, it does look same on a half turn. So we'll put a tick mark for this one also. Now we'll make 1/4 turn of this. See, it does not look same on 1/4 turn. So we'll put a cross mark for this. Does it look same on a half turn? Let us see. Yes, it looks same on a half turn. So we'll put a tick mark for this. Like this we have to do many objects. See students, here we are going to solve, we observe many examples of 1/4 turn and half turn. So stay tuned, you will get yourself updated, you will be very clear about these turns at the end of the video. Now see, draw what the following shapes would look like on 1/4 turn and a half turn. Now here these are the 4 shapes. Now we have to make these shapes that it should turn to 1/4 and half, and we have to draw that how does it looks on 1/4 turn and half turn. Let us make the 1/4 turn of this triangle. This is 1/4 turn of this triangle. You can use your pencil and ruler to make this. Now we'll make half turn of this triangle. This is half turn of this triangle. Now we'll make 1/4 टर्न ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर जो है 1/4 टर्न में और हाफ टर्न में दोनों में बराबर दिखेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं. अब हम लोग रेक्टेंगल का जो है 1/4 टर्न करेंगे. रेक्टेंगल का 1/4 टर्न हमने किया तो उसका शेप्स जो है वो स्टैंडिंग लाइन जैसा हो जाएगा, स्टैंडिंग रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा. अगेन विल मेक अ हाफ टर्न ऑफ इट. This is half turn of it. Yes, now we can see that it looks same as it was earlier. Now we will make 1/4 turn of this hexagon. Now we'll make half turn of this hexagon. Yes, like this we have to do. Now the question is, which of the above shapes do not look same on 1/4 turn? Now we have to find out which shapes are not looking same on 1/4 turn and which shapes do not look the same on half turn. हाफ टर्न के बाद कौन से शेप्स जो है, ये वाले हमारे शेप्स है 1/4 टर्न के बाद सेम नहीं दिख रहे और हाफ टर्न के बाद सेम नहीं दिख रहे, वो हमें यहाँ पर उनको टिक लगाना है. दैट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. Dear students, if you feel this video is useful to you, please do like and share with your friends. Let us move on to the all about 1/3 turn. Now see, 1/3 turn means in 1/4 turn we have divided the clock into 4 equal parts.
in half turn we have divided the clock into two equal parts. Now it is 1/3 turn, so we will divide the clock into three equal parts like this. See, we have divided the clock into three equal parts. This is our first 1/3, this is second 1/3, and this is third 1/3. So likewise we have to divide. One more thing, in our 1/4 turn, if you remember, we have done that an object travels to 90 degree to make a 1/4 turn. Here the object will travel 120 degree to make 1/3 turn. यहाँ जो है एक नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री रहता है, तो दो नंबर के बीच का हो गया 60 डिग्री और 4 नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया 120 डिग्री. अगर कोई ऑब्जेक्ट 120 डिग्री ट्रैवल करता है तो हम कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट ने जो है 1/3 टर्न ट्रैवल किया है. लेट अस मेक सी. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने पहले डिवाइड किया था क्लॉक को वैसे ही थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हम क्लॉक को इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं. शर्त सिर्फ इतनी है कि क्लॉक जो है वो हमारी 120 डिग्री के डिस्टेंस पर सारे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. लेट अस सी विद द एग्जांपल्स. नाउ which fan will look same on a 1/3 turn? Let us see, this is a fan. Now we'll make 1/3 of this. See, 1/3 में हमें सिंपल पता है ये वाला जो है 12 वाला वो ट्रैवल होके 4 पर आ जाएगा. दैट मीन्स वो 1/3 टर्न होगा. Now we'll make 1/3 of this object. See, this is 1/3 turn of this object. Here we can easily say that this fan will look same on a 1/3 turn. Now let us take another example of the fan. Here we can see the one of the blade of the fan is green. Now let us make 1/3 turn of this fan. See, here we can see जो ये 12 पर था, यहाँ पर देखो 12 पर है, वो ट्रैवल होके कहाँ आ गया, 4 पर आ गया. तो हम लोग कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट ने 1/3 टर्न ट्रैवल किया है. लेकिन ये जो है फैन वो 1/3 टर्न के बाद सेम दिखता है नहीं. सो विल राइट नो फॉर इट. नाउ ड्रॉ द शेप आफ्टर 1/3 टर्न. ये वाला शेप जो है हमें अब ड्रॉ करना है कि 1/3 टर्न के बाद वो कैसा दिखता है. पहले तो हमने उस शेप को कर दिया, अब उसका 1/3 टर्न कर देंगे. हमने यहाँ पर जो है ये 6 पर है, अगर ये ट्रैवल होके चला जाएगा 10 पर तो हम लोग कह सकते हैं कि इसने 1/3 टर्न ट्रैवल किया. अब देख सकते हैं आप, ये चला गया 10 पर, तो 1/3 टर्न के बाद ये शेप जो है कुछ इस तरह दिखेगा. Now 1/6 turn. Can you see the shape look same on 1/6 turn? Now see, 1/3 turn, 1/4 turn में हमने क्लॉक को कितने में डिवाइड किया था, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया था. 1/3 टर्न में 3 बराबर हिस्से. अब यहाँ पर हम लोग क्लॉक को 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. आप देख सकते हैं दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. सो 6 बराबर हिस्सों में हमने क्लॉक को डिवाइड कर दिया है. जो चीज़ 12 पर है अगर वो ट्रैवल होके 2 पर आती है तो हम लोग कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट ने जो है 1/6 टर्न ट्रैवल किया है. एक चीज़ याद रखिए, 1/3 टर्न जो था वो 12 से स्टार्ट होकर 4 तक जाता था. अब ये जो है 1/3 टर्न उसका एग्जैक्टली हाफ हो रहा है, उनके बीच में एग्जैक्टली आ रहा है. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट. सी, दिस इज 1/6 टर्न. हमने जो 12 पर था वो चीज़ अगर 4 पर आती थी तो हम लोग क्या मान के चलते थे कि उसने कितना ट्रैवल किया, 1/3 टर्न ट्रैवल किया. लेकिन जब जो चीज़ कोई 12 पर है और वो 2 पर आती है तो हम लोग कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट ने 1/6 टर्न ट्रैवल किया है. लेट अस सी. This is an object. Now can you see that this shape looks same on 1/6 turn? Now we will make 1/6 turn. यानी ये जो चीज़ है वो इसकी जगह पर आ जाएगी. देखते हैं. सी, दिस इज 1/6 टर्न. क्या ये दोनों, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट बराबर दिख रहा है? यस, इट लुक सेम ऑन 1/6 टर्न. इसमें कोई डिफरेंस है नहीं. दिस इज 1/6 टर्न. देखो ये सेम हो गया, दोनों बराबर ही दिख रहा है, कोई इसमें चेंज है नहीं. नाउ विल टेक दिस ऑब्जेक्ट्स. इसके 1/6 टर्न के बाद ये क्या दिखेगा? हाँ, क्या ये ऑब्जेक्ट सेम दिख रहा है पहले जैसा? नहीं, इसमें चेंज हो गया है. नाउ विल टेक दिस वन स्टार. स्टार में हम लोग देख सकते हैं इसके 6 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6.
तो जिसमें 6 चीज़ें हैं वो जब ट्रैवल करेगा तो 1/6 टर्न में भी वो सेम ही दिखेगा. तो स्टार ये जो है दिस विल ऑल्सो लुक सेम ऑन अ 1/6 टर्न. Now these objects, now here we will make these all 4 objects, they will travel to 1/3 turn and 1/6 turn. We'll see. This is an object. Now we'll make this travel to 1/3 turn. ये हमने 1/3 turn पे लिख लिया, यानी 12 से 4 तक. अब यही ऑब्जेक्ट का हम जो है 1/6 टर्न ट्रैवल करेंगे. इसने ट्रैवल किया है 12 से लेके 2 तक. Now this is objects and it will travel to 12 to 4 o'clock. And this is the object which will travel from 12 to 2 o'clock. This is 12 to 4 o'clock and this is 12 to 2 o'clock. ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये ऑब्जेक्ट 12 to 4 o'clock ट्रैवल करेगा, तभी हमारा 1/3 टर्न होगा. अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो 12 to 2 o'clock यानी 60 डिग्री ट्रैवल करेगा, तो हमारा जो है 1/6 टर्न कंप्लीट होगा. ये वाला देखते हैं. अब इसको हम लोग ट्रैवल करेंगे 1/3 टर्न यानी 12 to 4 o'clock. दिस इज 12 to 4 o'clock. देखो आफ्टर 1/3 टर्न ये दोनों सेम दिख रहे हैं. यस, नाउ दिस इज 1/6 टर्न. जबकि ये ऑब्जेक्ट जो है चेंज हो गया, पहले वाले से ये वाला ऑब्जेक्ट चेंज हो चुका है. नाउ विल टेक सम मोर एग्जांपल. Find out which of these figures look same on 1/3 turn, mark a tick. Which of the ones that will not look same after 1/3 turn, mark cross for them. We'll do that. See, we'll make 1/3 turn of this. 1/3 means 12 बजे से 4 o'clock तक. 12 बजे से 4 o'clock तक क्या ये दोनों सेम दिखता है? अगर हम लोग कलर को छोड़ दें, कलर कॉम्बिनेशन अगर हम लोग छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर है वो ऊपर आ गया है, अगर कलर को छोड़ देते तो सेम दिखता है, लेकिन हम लोग कलर को भी देखना है तो ये सेम दिखता है नहीं. सो विल पुट अ क्रॉस मार्क फॉर दिस, क्योंकि कलर चेंज हो गया. जो पिंक वाला कलर था वो चला गया नीचे की साइड. नाउ दिस ऑब्जेक्ट्स, let us make 1/3 turn of this objects. This is 1/3 turn. Does it look same on 1/3 turn? No. We will put a cross mark for this. We'll put a cross mark for this. Now this is a shape and we'll make 1/3 turn of this shape. See, it looks same on 1/3 turn, so we'll put a tick mark for this. It looks same on 1/3 turn, we'll put a tick mark for this shape. Now this is a shape and we'll make 1/3 turn of the shape. Does it look same on 1/3 turn? Yes, it looks same on 1/3 turn, so we'll put a tick mark for this. This is a shape and we'll make 1/3 turn of these shapes. Does it look the same on 1/3 turn? Yes, it looks same on 1/3 turn, so we'll put tick mark for this. We'll put tick mark for this. Now this is a shape and we'll make 1/3 turn of this shape. Does it look the same? Yes, it looks same on 1/3 turn. I think we are very clear about 1/4 turn, 1/3 turn and 1/6 turn. If you have any doubt regarding these turns, you can surely comment in the comment section and we will get back to you soon. Thank you so much.